Hello, hi everyone. I am Dr. Sahil Moore. So today I will be presenting another important topic for your upcoming NTPC exam. So topic for today is ecological pyramids. So what are ecological pyramids? Basically, it is a graphical representation of your trophic structures. Okay, graphical representation of trophic structure. It starts with producers at the base. आपके बेस पे क्या रहेंगे? Producers, starting with the producers at the base and forming an apex at the top. Okay, at every successive level, it forms an at the end apex. Okay, कैसे बनाते हैं? Let me show you with the figure. Consider it as a base. Okay, this is a base. Base पे क्या है? Producers. Producers can be like I'm considering the example of grassland ecosystem. Okay, so हमारे producers क्या रहेंगे? Base पे grasses. Okay, this is a base starting with producers at the base. Okay, and at the next level there may be herbivores. Okay, herbivores can be insects. Herbivores can be insects which feed on grasses. Then at next level, carnivores. Okay, and then at top, forming an apex, top carnivores. So this is the basic structure of an ecological pyramid. Okay, कुछ इस तरह से आपका इकोलॉजिकल पिरामिड दिखेगा. हम इकोलॉजिकल पिरामिड को ज्यादातर एल्टोनियन पिरामिड ही बोल देते हैं. क्यों बोलते हैं इसको एल्टोनियन पिरामिड? बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स एल्टोन इन 1920s. ओके, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड को? We can also say it as Eltonian pyramid. Okay, they can also directly ask you what is another name for ecological pyramids. Okay, so it is Eltonian pyramid. So ecological pyramids are basically of three types. Okay, we can make pyramids on the basis of numbers. Number one, on the basis of numbers. Number two, pyramid of biomass. Okay, and lastly, pyramid of energy. Pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. So now we will discuss one by one with the examples. Okay, what is pyramid of number? So starting with pyramid of numbers. It simply defined as graphical representation of number of individuals organisms per unit area. Okay, कितने number of organisms आपके present है, ठीक है, हर एक लेवल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है. तो ये आपके जो इसका स्ट्रक्चर होएगा वो आपका ग्रासलैंड के लिए अलग हो सकता है, आपके जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अलग हो सकता है. तो कैसे कैसे वो रहेगा, ठीक है. तो स्ट्रक्चर बेसिकली रहता है अपराइट, इन्वर्टेड और स्पाइंडल. तीन टाइप पे हो सकता है. जो ये मैंने स्ट्रक्चर बताया ये क्या है? अपराइट है, ठीक है, ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये होगा अपराइट. अगर यही स्ट्रक्चर हमारा ऐसे बने, if somewhat structure is like this, then it is inverted. It is known as inverted structure, upright inverted. तो अब इसके बेसिस पे हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स पढ़ेंगे. So first is grassland aquatic ecosystem for pyramid of numbers. Okay, now we will study what is the shape of pyramid for grassland aquatic ecosystems. So pyramid shape for grassland aquatic is always upright. Okay, structure will be always upright. Why? Because at the base the number of organisms will be large as compared to the herbivores, then at carnivores, then at top carnivores. Okay, कैसे? So let's see with the example.
द प्रोड्यूसर्स फॉर्म अ ब्रॉड बेस इन द पिरामिड। ओके, अगर हम ग्रासलैंड की बात करेंगे, ब्रॉड बेस क्यों बनेगा कि उसमें ग्रासेस ज्यादा नंबर में है, ग्रासेस आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर एज कंपेयर टू योर हर्बीवोर्स लाइक इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट के कंपेरिजन में आपके ग्रासेस की क्वांटिटी ज्यादा, नंबरिंग ज्यादा है। ओके, तो आपका बेस ज्यादा रहेगा। और उसके बाद आपका जो कार्निवोर्स है, फ्रॉग्स, बर्ड्स, ठीक है, उनका नंबर कम होता जाएगा एज वी गो एट द नेक्स्ट लेवल। Then top carnivores are hawk, eagle, which are gradually less in number. Okay, so forming an upright and erect pyramid. ठीक है, upright and erect बनेगा, कैसे बनेगा? Like this. This is producers of grasses, then herbivores, insects, carnivores, frogs and birds. Okay, frogs and birds are consuming insects. Okay. And there are top carnivores, hawks, eagles, foxes are known as top carnivores, which feed on frogs and birds. Okay, so always pyramid of number for grassland will be upright. Similarly, we can make pyramid of number for your aquatic ecosystem. How? Let's start with the producers. Okay, this is producers forming the base, which is large. Why large? Because phytoplanktons are present in large number. Phytoplanktons. ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स आपकी बेसिकली माइक्रो एल्गी होती हैं। ओके, इट इज आल्सो नोन माइक्रो एल्गी व्हिच कंटेन्स क्लोरोफिल। ओके, सो दे रिक्वायर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आपकी जनरली आपके टॉप ऑफ द वाटर या ओशियन पे फ्लोट करते मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको ज़्यादा सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो जनरली आपके ऊपर की तरफ रहते हैं। तो इसलिए हमारा प्रोड्यूसर का बेस ज़्यादा रहता है, फाइटोप्लैंक्टन्स आर लार्ज नंबर। ओके, फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है। ओके, ये जनरली फ्लोट करते हैं ऊपर, इनको माइक्रो एल्गी बोलते हैं, तो आपके ज्यादा इसका साइज रहेगा। सो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट विल बी हर्बीवोर्स। ओके, हर्बीवोर्स इसमें होते हैं हमारे जूप्लैंक्टन। यू कैन नॉट से हर्बीवोर्स, मतलब नेक्स्ट लेवल इज जूप्लैंक्टन्स। देन नेक्स्ट विल बी small fishes. Okay, then at top, like somewhat like this, at top your sharks or other big fishes. Okay, so this is the example of aquatic ecosystem. इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अपराइट। ओके, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे पेपर में कि पिरामिड ऑफ नंबर का बताइए, फॉर ग्रासलैंड का कैसा शेप रहती है, ओके, फॉर फॉरेस्ट के लिए क्या शेप रहती है। सो यू शुड रिमेंबर दीज शेप्स। ओके, सो नेक्स्ट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की थोड़ी सी शेप ना ही डायरेक्ट आपकी अपराइट होती है ना इन्वर्टेड होती है, क्योंकि एक स्पाइंडल शेप होती है इसकी। वो कैसी होती है? आपके जो लार्ज साइड ट्रीज हैं वो तो आपके दीज आर लेस इन नंबर। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, लार्ज साइड आर लेस इन नंबर, सो फॉर्मिंग अ नैरो बेस, योर बेस विल बी नैरो। ओके, इट विल नॉट बी मच ब्रॉड एज कंपेयर टू द ग्रासलैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, then the trees support large number of herbivores like insects, birds, frogs that feed on them. So at the next level, herbivores are large in number as compared to the producers. So your herbivore shape will be larger. Okay. Then at the next level, the secondary consumers like predatory birds are less in number. Okay. Then again the size is decreasing. First that it was small,
फिर वो बढ़ा, then it is again increasing, and then at the next level top carnivores are again smaller in number, forming a narrow towards apex. Okay, so it is narrow from both the ends. Okay, it is narrow on both sides, making it a spindle shape. Broader in the middle, okay, narrow at the both sides. तो ये क्या होगा, मतलब डायग्राम क्या बनाए? Diagram will be somewhat like this. Producers, trees lesser in number, then herbivores, insects, birds larger in number, then again carnivores getting reduced in numbers, fox, snakes, lizards. Then at the top carnivores, tigers, lions are lesser in number as compared to carnivores, so forming narrow base at both the sides. Okay, so this will be the pyramid of number structure for forest ecosystem. So lastly, we can read for the parasitic food chain. Okay, what will be the pyramid of number shape for parasitic food chain? For parasitic food chain, the shape will be inverted. Okay, the shape will be inverted. How? In this, hyperparasites will be larger in number. Okay, hyperparasites are larger in number, like fleas, microbes. Okay, microbes are examples of hyperparasites. Then parasites like bugs are lesser in number. Okay, so your producer's tree is narrow at the bottom, and at the top hyperparasites are larger in number. Okay, so this shape is inverted. Starting with the trees, producers are lesser, birds increasing in number, bugs of which is example parasites are increasing in number, and finally आपके लास्ट में hyperparasites which are microbes are larger in number. Okay, आपके जो microbes हैं वो ज़्यादा नंबर में होंगे, ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, so your top structure will be broader base. Okay, forming an inverted. Clear है? So after pyramid of number, okay, we have covered all the examples for pyramid number. So after pyramid of number, next will be pyramid of biomass. Okay, so what is pyramid of biomass? It basically represents total amount of organic matter. Okay, total amount of organic matter present in an ecosystem. उसमें कितनी organic matter present है? In unit area, total amount of living organic matter in an ecosystem in unit area. ठीक है, अब यहाँ पे हम बायोमास की बात करेंगे, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, पहले हम नंबर्स की बात की थी. ओके, सो इट कैन बी मे बी अपराइट और इन्वर्टेड, इट कैन बी बोथ. So we will start with pyramid of biomass in a forest ecosystem. Okay, so its shape will be upright. Biomass shape for forest ecosystem will be upright. How? Because at the producers, trees produce greater biomass, greater amount of organic matter. Okay, as compared to herbivores. So trees produces more organic matter, so it is forming a broader apex than herbivores, forming a narrow apex. Okay, sorry, narrow trophic structure. Then at the end, carnivores, snakes, and lastly lion, tiger, hawk produces less organic matter as compared to trees. Okay, so it is getting narrow at the end. So this shape is known as upright. Okay, so basically as I have described, the plants and trees make up a large percentage of the biomass, which gradually lessening of biomass producing at herbivores, carnivores per unit area at a particular time. Okay, so next, pyramid of biomass. In contrast, for pond ecosystem will be inverted. Okay,
its shape will be inverted. When we studied a pyramid of number for aquatic ecosystem, the shape was upright. Okay, पर अब हमारे यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम में शेप क्या है? इन्वर्टेड. ओके, ये आपको अच्छे से याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है. नंबर्स में उसमें बेस बढ़ रहा था, बट नाउ हेयर इन पॉन्ड इकोसिस्टम फॉर pyramid of biomass, phytoplanktons producing less biomass. Okay, at the base producers phytoplanktons are producing less biomass. Okay, so forming narrow base. Then zooplanktons producing more biomass, then small fishes producing more biomass as compared to the herbivores, and lastly big fishes, top carnivores, are producing maximum biomass. Okay, so for your pond ecosystem, this shape will be inverted. When we studied this shape for pyramid numbers, that was upright. Okay, so अच्छे से याद कर लो इस चीज को. इसके लिए रहेगी इन्वर्टेड. क्लियर है? Moving on to your last shape, pyramid of energy. Okay, pyramid of energy. We have called pyramid of number, pyramid of biomass, lastly pyramid of energy. Shape for pyramid of energy will be always upright for any ecosystem. Okay, इसको अच्छे से याद कर लो, रिमेंबर इट क्लियरली. अगर आपसे किसी का भी एग्जाम्पल पूछ लेंगे, इफ इट आस्क फॉर फॉरेस्ट और एक्वेटिक, इट्स आंसर विल बी अपराइट. व्हाई? बिकॉज it simply represents the amount of energy presented at each trophic level. Okay, it represents the amount of energy present at each trophic level, and practically at every level only 10% energy is supplied. Okay, so at each level 90% energy is consumed. Okay, so if we start with your producers, if you suppose this is pyramid of energy. Okay, so its shape will be always upright. Okay, it's clear. Suppose if producers make up to 100 kilocalorie energy. Okay, if producers are making 100 kilocalorie of energy, then only 10% is supplied to the herbivores. Okay, which means 90% is lost in metabolic process. Okay, आपकी 90% एनर्जी लॉस हो जाती है. ठीक है, यहां से 90%, यहां पे थी हमारी 100. ओके, इसके पास पहुंची सिर्फ 10. अब अगर इसका 90% लॉस होगा तो कितना बचा? 1. ओके, और जो आपका टॉप पे पहुंचेगी कितनी? सिर्फ 0.1. तो हर लेवल पे 90% कम हो रही है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको 10% लो भी बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? 10% लो, क्योंकि सिर्फ 10% ही बच रही है हर एक के पास. ओके, this decline in energy at subsequent level is referred to as Lindemann data or 10% low. 10% क्या बोलते हैं? आपको क्लियर है? ठीक है. Another important point for pyramid of energy is it follows second law of thermodynamics. Okay, it follows second law of thermodynamics. As energy flow declines from producer level to successive trophic levels. Okay, when energy is transferred to next trophic levels, only about 10% of it is utilized to assemble body mass. Okay. क्या ये आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है और आपकी एनर्जी 90% कम हो जाती है. ठीक है, सिर्फ 10% ही पास होती है. तो आई होप आपको पिरामिड ऑफ बायोमास भी क्लियर है और पिरामिड ऑफ एनर्जी भी क्लियर है. ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है? बेसिकली 10% लो है आपका और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे रूल करता है. तो हमने तीनों पढ़ लिए पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी. सो नाउ वी विल discuss some questions, okay, related to this topic.
So question number 1 is, what is a graphical representation of the relationship producers forming the base and top carnivores forming the tip between the individuals present in various trophic levels of a food chain called, okay, what it is known as? Read all the options and trying to answer. So this graphical representation is known as ecological pyramid, as we studied. Okay. So next is, who formulated the ecological pyramids? Who formulated the? As I told you, it is also known as Eltonian pyramid. So it is on the name of Charles Elton. Okay. So correct answer will be C. Next question is, which of the following pyramids represent the rate of flow of energy at successive levels? कौन सा इनमें से रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को प्रेजेंट करता है? कौन करता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी. ओके. सो लास्ट क्वेश्चन इज, which inverted pyramid is observed in a sea or pond ecosystem? Okay, you have to tell the which inverted pyramid of all these is observed in pond ecosystem. So this question's answer, do comment in comment section below. Okay, I will be waiting for your response for this question number 5. Okay, kindly respond your answer in the comment section below. So we will meet in the next video. Thank you.